आज ऐसा लग रहा है कि हमारे स्टूडियो में बिजली है। परमेश वर्मा हमारे साथ। थैंक यू सो मच। डू यू फील ऑल द वेट ऑफ दोज गाइज जो आपके गाने सुनते जिम में? देयर आर ग्रोन मैन, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਐਡੇ ਐਡੇ ਮੈਸੇਜ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਪਰਸਨਲ ਡਾਇਰੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਐਵੇਂ ਕਰਨ ਕਿ ਬੰਦਾ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਵੇ ਆ ਰਮੀਸ਼ ਦਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣ ਕਿ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਰ। When that bullet had hit, उससे चीजें बदली? ਸਭ ਕੁਛ ਹੀ ਉਦੋਂ ਬਦਲਿਆ ਵੀਰੇ। I've tried everything to find peace, you know, if it was money, if it was fame, like I've begged, and then this is where I've come conclusion to कि यार पेरेंट्स को कभी ड्राइव के लिए लेके जाते हो? हाँ जी वीरे, अनसेड सा रूल है कि जब कोई नई गाड़ी आती है सबसे पहले मेरे मदर चलाते हैं। When I bought my new Lamborghini, my mom drove the car. Does she enjoy it? Yeah, she loved it. मैं तो जब आपकी गड्डी देखदा ना मुझे यकीन ही नहीं होता। I physically give my car a hug. Do you think कि when you're giving your car a hug and a kiss, you're giving your teenage self a hug and a kiss? Yes. ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਫੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ endurance ਹੈ। You just have to stop thinking and just keep showing up. Life ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। Like I remember people would come, you know, they'll talk to me, they're ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹੋਇਆ, and 15 minutes later they're posting Snapchats. That just showed me that this is life, it's going to continue. आज ऐसा लग रहा है कि हमारे स्टूडियो में बिजली है। परमेश वर्मा हमारे साथ। सो हैप्पी टू बी सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू भाई। मिले थे हम वो स्पॉटिफाई इवेंट पे एट करण औजला's एल्बम लॉन्च। जस्ट फेल्ट सो मच ऑफ अ कनेक्शन विद यू। वेलकम टू आवर वर्ल्ड। सत श्री अकाल वीरे, थैंक यू सो मच मैन, आई रियली अप्रिशिएट, थैंक यू सो मच। सेम बस बातें करनी है आपसे। हाँ जी, हाउ आर यू बाजी? बहुत बढ़िया वीरे। टेल मी मोर। I'm exactly where I wanted to be in life. Yes. And doesn't mean it's great, it's good or bad, but this is where, you know, I wanted to be. So, and it does come at a price, and that I was always willing to pay. But the fact कि मैं बस जो करना चाहता था मैं वो कर रहा हूँ. So I'm really happy. शुरुआत से ही थोड़ी सी डेप्थ लाता है। नहीं मैं फिर उन ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਸੀ और I could have just went कि जी मेरी फिल्म आ रही है, मेरा गाना आ रहा है, so I didn't want it to go there, so I thought I'll just be honest with you. As the years have gone by, आपके चेहरे पर सुकून बढ़ा है, ये मैंने नोटिस करा है from a distance. अच्छा जी। Am I right? I hope so. हाँ जी। बहुत पीसफुल हो रहा है आपकी अब। थैंक यू जी। एंड आई फील कि आपकी बातों से लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं आजकल। यू आर अ वेरी डीप पर्सन। आई नो कि आप बहुत सारी किताबें पढ़ते हो, यू आर अ डीप थिंकर। हाँ जी। एंड आई थिंक कि लोग बस अब आपकी इस साइड को और ज़्यादा डिस्कवर कर रहे हैं, स्पेशली द लेडीज। थैंक यू। Am I right? Am I wrong? So I think with time, there is a materialistic world, you know, jo the baggage that you carry all your life, the insecurities that you carry all your life, जैसे जैसे वो अचीव करते रहते हो, I feel either you can just get lost in that, or ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਕਸੈਸ ਜਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਹਾਈਟ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਚਾਈ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਡੂੰਘਾਈ ਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਓ ਵਾਓ। ਹਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਜਰਨੀ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਯੂ ਨੋ ਲਾਈਫ ਕੀ ਸੀ। ਹਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਲੋਜ਼ ਯੂ ਨੋ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਐਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪਾਮ ਟਰੀ ਵਾਂਗੂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਰਗਦ ਵਾਂਗੂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ once I was able to kind of, you know, check out all my insecurities, I don't know if I have the right word, that's when I was like यार ਇਹ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਰਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। क्या थे insecurities? ਇਹੀ ਵੀਰੇ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੀ ਇਨਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਓਕੇ, I don't have enough, you know, I don't come from a lot, and most of the insecurities are kind of, you know, वो आप पे थोप दी जाती हैं, and you're just designed कि ये मेरी इनसिक्योरिटी है, बाद तो लगता वो नहीं है। For instance, now I don't look at my life from an artist's perspective.
आई लुक एट माई लाइफ फ्रॉम माई ओन परस्पेक्टिव कि जब मैं 15 साल का था या जब मैं 18 साल का था मुझे क्या चाहिए था, what would have made me happy. And the day I started looking at my life from that lens, I've been satisfied in everything. So ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਨੇ ਜੇ ਬਾਹਰ ਖੁਸ਼ੀ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲੱਭ ਲੈਣੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬੰਦਾ ਉਹ ਜਰਨੀ ਵਿੱਚ ਲੌਸਟ ਰਹਿ ਜੇ. So I don't know if I'm making sense or not. No. एक पॉइंट रहता है सेल्फ रियलाइजेशन का, जहाँ आप खुद के लिए जीने लगते हो, समाज के लिए नहीं. हाँ जी. अकॉर्डिंग टू मी यही हायर कॉन्शियसनेस थिंकिंग होती है. ये एक्चुअली मैंने शिखर धवन से सीखा है शो के थ्रू. उन्होंने कहा कि उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट तब आया जब उन्होंने हाई कॉन्शियसनेस थिंकिंग अडॉप्ट करी एंड कॉन्स्टेंटली स्टार्टेड थिंकिंग कि सब कुछ ठीक ही है, आई ऑलरेडी हैव एवरीथिंग, आई एम जस्ट लिविंग माई लाइफ फॉर मी. फिर और चीज़ें अट्रैक्ट होने लगी. एंड ऑनेस्टली इस साल ये मेरी भी लर्निंग रही है. मैंने नोटिस करा है कि जब आप अंदर से हाई कॉन्शियसनेस हो जाते हो, चीज़ें खुद से होने लगती है, चीज़ें ईजिली हो जाती है आपकी लाइफ में. एंड आई थिंक सक्सेस इज नॉट द गोल, ईज इज द गोल. ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀਰੇ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰਿਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ. There is difference between being hopeless and being hopeless right now. Being hopeless and being hopeless right now. So there's a moment, you know, like 2:30 at night, you feel my life is shit. ये नहीं सही, ये नहीं सी, ये नहीं सी. That's you being hopeless right now. You're not hopeless. But your feelings, they trick you. Because जो fear है, जो ego है, वो ईगो या फियर बन के नहीं आता, वो विजडम बन के आता है, वो लॉजिक बन के आता है. सो आई फील यू हैव टू डिटैच योर सेल्फ फ्रॉम योर इमोशंस, योर फीलिंग्स. आई एम नॉट सेइंग डिसरिगार्ड देम, बट कैच देम इफ दे आर लाइंग टू यू. एंड आई हैव ADHD, सो माई ब्रेन इज ऑलवेज प्लेइंग ट्रिक्स विद मी. सो मेरा दिमाग ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਐ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਹੈਲੋ ਚੱਲ, this is not me, this is you being bored, you want something else. उस इवेंट पे बादशाह भाई ने एक चीज़ कही थी कि क्रिएटिव लोगों की कर्स ये होती है कि वो डिप्रेशन में भी क्रिएटिव हो जाते हैं. हाँ नहीं ਵੀਰੇ, ਮੈਂ आई विल गिव यू अ डिफरेंट परस्पेक्टिव टू इट. आई फील ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵੀ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦਵੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ. ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਨਾ ਜੌਬ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੈਟ ਮੀ ਸ਼ੋ ਯੂ, ਹੈ ਨਾ. ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਟ ਇਟ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆਈ ਫੀਲ ਦ ਮੋਮੈਂਟ ਆਈ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ਡ, ਯੂ ਨੋ, ਆਈ ਨਿਊ ਅਬਾਊਟ ADHD बट आई डिडंट रियली, आई नेवर डोव इनटू इट. लेकिन जब मैं ADHD को थोड़ा बेटर समझने लग गया, then I was like, oh shit, everything makes sense. Like, क्योंकि we are good at pattern recognition. ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਟਰਨ को जब recognize करते हो, then it makes a lot of sense. So now I manage my hyper focus. I know कि मैं ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ. Like I know exactly when my brain is going to trick me. So I'm very conscious of that. So and I think that kind of had a good impact on my personal life, because then I started looking at life from that lens, and that changed it. मैंने एक कोट पढ़ी थी कल इंस्टा पे, एक स्पिरिचुअल पेज पे कोट पढ़ी थी. द कोट वाज, ऑलवेज नो दैट इन लाइफ यू आर नेवर रियली रिएक्टिंग टू लाइफ, यू आर ओनली रिएक्टिंग टू योर नर्वस सिस्टम. Yeah, that makes sense. Things will come, things will go, external things will change, but at the end of the day जितना आप खुद के दिमाग को हैंडल कर पाते हो वही आपकी लाइफ में. देखो लाइफ यही है, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਅੱਡ ਹੈ. ਸੋ ਆਈ ਫੀਲ ਇਹ ਆਪਣਾ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣਾ ਲੈਂਸ ਹੁੰਦਾ. ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਮੈਜਿਨ ਲਾਈਕ ਵੈਰੀ ਸਿਮਿਲਰ ਟੂ ਦਿਸ ਸੈਟਅਪ, ਰਾਈਟ? ਲਾਈਕ ਦੇਰ ਆਰ 1 2 3 4 5 6 7 8 ਕੈਮਰਾਸ ਹੀਅਰ ਰਾਈਟ ਨਾਓ. ਹਰ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਲੈਂਸ ਹੈ. ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹੀ ਸ਼ਾਰਟ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਸੁਪਰ ਕਲੋਜ਼ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਮਾਸਟਰ ਹੈ. ਸੀਨ ਉਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਹੋਰ ਹੈ. ਜਿਹੜਾ ਕਲੋਜ਼ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਟੌਪ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ. ਸੋ ਇਟ ਆਲ ਕਮਸ ਡਾਊਨ ਟੂ ਅਸੀਂ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ. ਤੇ ਜੇ ਆਪਣਾ ਲੈਂਸ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਬਲਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜ਼ੂਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੀ ਜਸਟ ਹੈਵ ਟੂ ਨੋ ਕਿ ਅੱਛਾ ਮੇਰਾ ਜ਼ੂਮ ਲੈਂਸ ਲੱਗਿਆ, ਆਈ ਜਸਟ ਨੀਡ ਟੂ ਚੇਂਜ ਮਾਈ ਲੈਂਸ. ਸੋ ਦੈਟਸ ਜਸਟ ਬੀਇੰਗ ਇਨ ਯੋਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਟੇਟ. ਆਈ ਫੀਲ ਆਈ ਐਮ ਵੇਟਿੰਗ ਟੂ ਬਿਕਮ ਅ ਫਾਦਰ so I can stop getting into trouble. Trust me, it's not going to help you, bro. क्या बदलता है fatherhood की वजह से? It's changing every day, bro. Like, see, when you're single,
when you're not married, when you don't have a child, you feel ਜਦੋਂ ਮੈਂ father ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, like, you know, when I become a father, this is what will happen. But you're just thinking about the first day, or maybe the first month, or maybe the first year. That's going to go away in some time. It's ever evolving. How old is Sada now? She's going to turn 3 now. Wow. Yes. So, Batao, touch wood. Nothing, like, it's just like, it's scary. Initially it was very scary. Okay, मैं लगा था यार मैं तो आप नहीं पता कुछ, like, you know, मैं क्या बताऊंगा उसे. And I definitely, it's just weird, man. Like, आपको लगता है कि maybe, I don't know, like, initially you want to protect your child from all the evil in the world, and you feel you're just, you know, safeguard her. But then at the same time you feel that if she doesn't experience life, you know, she'll always be, you know, she'll be living in that bubble. So it's changing. पहले मुझे लगता था कि मैं वो दीवार बन के खड़ जाऊंगा हर एक चीज़ में, you know, I'm going to protect my child. But now I feel like she does need to understand, you know, what life has to offer, because अगर मैं वो दीवार बन गया तो सारी learning भी रोक दूंगा, you know. So adversity brings out the true character. So now, but she's too young. So, and it's only a lot of times you have, you know, grown-ups, you know, still being children. So it's just when and how you sort of introduce her to the reality. That's the confusion. उनके साथ भी प्राइवेट पॉडकास्ट करते हो? She's too young, man. बताते हो चीज़ें? नहीं, हड़े नहीं. हड़े नहीं. मैं चाहता भी नहीं. मुझे लगता है कि there will be time when she would wanna ask. She would wanna know. When she has a question, I shall have an answer. Yeah. Or else, you know, you just waste your words. And I don't want to do that with my child. You know, I feel I want to be that one person she comes down to and you know, comes with a question. सदा जानती है कि who Parmesh Verma is? Yes and no. Okay. But she doesn't care. She understands something? I don't think so, bro. Like, she knows that it's my dad's song, but she doesn't understand that, you know, हर बंदे का song नहीं होता. She's like, मोआना दा भी song हुंदा है ते dad दा भी song हुंदा है ना. So I think it's that. But she will, I think, with time. एक इंसान ज़्यादा soft हो जाता है parenthood की वजह से. Define soft. Maybe softer to yourself. Maybe. ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ a lot of times, like, I feel I'm in a very power position right now. मैं अपनी ज़िंदगी दी मैं उस point पे हूँ जहाँ, like, I have control over a lot of things, and I'm not talking about business, finance, or, you know, my career. In general, like, I'm in control. But एक ही जगह है जहाँ मैं लाचार, बेबस. That's my daughter, you know, and in a good way. You know, like, nothing works. Like, अगर उससे बात हो गई, then I'm gonna have a peaceful sleep. If I couldn't talk to her, I'll be up all night. Like, I know, like, none of my books will help. You know, none of my, like, कुछ भी कर लूँ, like, I won't be able to sleep if I haven't spoken to my daughter. That's, you know, that's the power that she has. But I think that's good. I've consciously done that. And what if मैं इस चीज़ को ऐसे देखता हूँ कि मैं अपनी सारी vulnerability इकट्ठी करके अपने बच्चे को ले रखती है ना, कि this is it, you're allowed to do anything you want to with this. वाह. उस तो बिना होर मैं सारे कितने ना cemented हो गया. So it was my parents, they still are, but I think ਜਿਹੜੀ vulnerability ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਡਾਟਰ ਕੋਲੇ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖ ਲਈ ਜੀ. Wife? ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਹਨਾ. But I think with my daughter, I think that's where, like, sometimes I would call her, she's on the phone, she's playing, she doesn't want to talk to me. तो मैं कहूँगा सदा मैं फ़ोन कट्टा, she goes nope, like, just sit there, I'm gonna ignore you. So I think I love that, bro. Is parenthood the purpose of life? Like, how do you define parenthood? It's a chance to live your childhood again, I think. And you do it right. Yeah. You try and do it right. Yeah. And you try, I think you try blocking your child away from the generational trauma you are carrying. You're trying to cut that chain. यही है? Yes, I feel जैसे it's also you living your adolescence as well
through your child, you know, and your youth. ਸੋ ਆਈ ਫੀਲ ਪੇਰੈਂਟਹੁੱਡ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ 5 10 15 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੱਕ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈ ਫੀਲ